we have to identify and then I profile distinct set of buyers जिनकी नीड्स सिमिलर हैं, जिनकी प्रेफरेंसेस सिमिलर हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. When a company starts to market the product, when a company starts to create the marketing strategy for a product, so first they find out the टारगेट ऑडियंस, एग्जैक्ट सेगमेंट की जिनको अपना जहां पे प्रोडक्ट को बेचना है. तो उस स्टेप को जहां पे हम सिमिलर लोगों को, जिनकी सिमिलर प्रेफरेंसेस हैं, जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, उनको ग्रुप करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, राइट. नाउ व्हेनेवर अ कंपनी इज डिसाइडिंग और ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सेगमेंट, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट फाइंड आउट करती है. द कंपनी कैन गो इन फॉर मोर देन वन सेगमेंट ऑल्सो, राइट. तो उस केस में हम जब उन सेगमेंट्स में से एक या दो सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं in which the company exactly wants to enter is known as your market targeting. And again, the third step is positioning, which we are going to study in detail today. Positioning is for that particular segment जो हमने shortlist किया है, उसके लिए हम एक marketing strategy बना रहे हैं, एक advert बना रहे हैं, जिससे हम कंपनी की जो यूएसपी है, जो इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं कि विज़ कॉम्पिटिटर्स हमें ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, ये ऑफरिंग क्यों देनी है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज पोजीशनिंग, ठीक है. एनी डाउट टिल नाउ एनीवन? नो मैम. ठीक है, आगे चलते हैं. फाइन. अब नाउ द नेक्स्ट इज what are the levels and patterns of market segmentation. तो सबसे पहला हुआ mass market, one product fits all. Then we come to the segment marketing. Segment marketing में क्या करते हैं? We try to find out, we try to identify groups of population or the consumers which have the similar patterns, which have the similar features. ठीक है, वो हो गई आपकी segment market. Then आती है आपकी niche marketing. Niche marketing में क्या होता है? Within the segment, अगर कोई हमारा स्पेशलाइज्ड और सेगमेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ शैम्पू विच इज ट्रीटिंग डैंड्रफ, सो एंटी डैंड्रफ इज वन सेगमेंट. बट उस एंटी डैंड्रफ में भी इफ देर इज अ सब segment or a narrower segment which is treating a particular kind of dandruff caused by a particular kind of bacteria, then that is what? That is a niche market. segment के अंदर भी segment अगर हम कर देते हैं जो कि बहुत specialized होता है, उसको हम बोलते हैं niche marketing. फिर होती है local marketing. Local marketing is again in terms of geography or the demography, कि बिल्कुल ही हम local level पे जाके based on the geography, for example specifically in the northern part of the region there is like a special kind of tea in Kashmir called kahwa, वो बना रहे हैं. That is local marketing. And then we come on down to the individual customer marketing. Now what does individual customer marketing mean? कि we are targeting the product, we are trying to understand the very individualized needs of the consumer. So that is individual customer marketing. तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके different segments, different levels हो जाते हैं, patterns of segmentation जहाँ पे product को market किया जाता है. Any doubt till now anyone has? No ma'am. ठीक है, shall I move ahead? No, ma'am. Yes, ma'am. Sure ma'am. ठीक है. हेलो मैम. Then comes the segmentation process, कि जब हम actually में segmentation करने चाहते हैं, so how do we go about doing the segmentation? So first step is the need based segmentation. So सबसे पहले हम customers को group करते हैं based on their similar needs and what are the benefits that the customers are trying to get from a particular product or service, or what problem of a customer is a particular product or service solving. तो जो similar groups हैं उनको हम एक साथ segment करने की कोशिश करते हैं. Now next is the segment identification. So for each segment
हम डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका यूसेज बिहेवियर क्या है, हम उस पे उसको और ज्यादा डिवाइड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सेगमेंट कितना अट्रैक्टिव है। हमने सेगमेंट तो बना दिया, बट हाउ अट्रैक्टिव इज माई सेगमेंट। सो हेयर इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसका मार्केट ग्रोथ कितना है, कितना कंपटीशन है, कितना मार्केट एक्सेस है। सो वी ट्राई टू गेज आउट द ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट। आफ्टर वी हैव डन दैट, हम मार्केट की सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल है वो सेगमेंट। देन फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि हमने फाइनली डिसाइड किया है, उसके लिए वी ट्राई टू क्रिएट अ वैल्यू प्रोपोजिशन और मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर segment. So this is the process of segmentation. Now again जो हमने segment choose किया है, वो segment effective कैसे हो सकता है? We have to find out कि whatever segments I have defined or whatever segments I have decided, they are also effective. So what are the certain criteria to make my segment effective? So first is my segment has to be measurable. Measurable का क्या मतलब है? So I am able to measure it. It is measurable. It is not just something which is मतलब बिल्कुल हवा में है और हम सिर्फ उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे. It has to be measurable. Then second is it has to be substantial. Substantial का मतलब है कि कुछ उसमें there has to be a certain amount of people, certain amount of consumers. It should not be nothing जो just हवा में है. Then accessible, obviously जो भी आप सेगमेंट चूज कर रहे हो उस तक आप पहुंचने चाहिए हो, ठीक है, हवा में नहीं होना चाहिए वो सेगमेंट. देन डिफरेंशिएबल, जो भी आप सेगमेंट बना रहे हो वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हुए होने चाहिए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशिएबल हियर? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Comparison. Comparison between whom? Between two products. Different product. वेरी गुड. डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकती हैं. हाँ, करेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं. तो जो भी मैं सेगमेंट बना रही हूँ वो मेरे दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होना चाहिए. ओके. नाउ अगेन इट हैज टू बी एक्शनेबल. एक्शनेबल का क्या मतलब होता है कि whatever strategies that you are making, whatever things that you are deciding, उस पे आप वर्क कर सकते हो. अगेन इट इज समथिंग नॉट विच इज जस्ट करने के लिए आप कर रहे हो. It needs to be action oriented also. So these are certain characteristics of a good market segment. Now these market segments, again we have to only talk about the consumer segments, not the business segments. तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेगमेंट क्या होता है, what are the levels of segmentation when we talk of a market. ठीक है. Now next comes what are the major segmentation variables. How is segmentation done? किस basis पे हम segmentation को करते हैं? So there are different variables or different bases of segmentation. So for example, geographic segmentation. So based on the geography, we can divide or segment the population. So can you give me certain examples? Can you give me certain examples of the same? Geography की basis पे products को segment करना है. Woolen clothes and high altitude areas. Region or a state. So give me that. That I know, but can you give me examples of that? Like you said, in Kashmir, tea, a kind of any kind of tea plantations are there. Yes. Very good. और बताओ company specific. Different states in different parts of the country. Yes. और बताओ. Packaged foods. Phones. Packaged foods कैसे होगा? लाइक मैम सेगमेंट वाइज अगर देखने जाए तो पैकेज फूड्स जैसे बाहर के कंट्री में ज्यादा मार्केटिंग
मार्केटेबल एक्टिविटीज वहाँ पे होता है, लेकिन हाँ, अगर आप उस इंडिया फॉर्म में देख लो तो देन इट विल बी मैम जैसे जैसे मैम लेज ने अपने इंडियन मसाले करके वो अलग से वो करता है, और अमेरिकन क्रीम के लिए क्रीम लेज है। यस, वेरी गुड. Is introducing their pizzas according to the region or geography. यस, वेरी गुड. और मैम गेम वाले जैसे चाइना में अलग से वो करते हैं अपना डेवलपमेंट के लिए, उनका बिल्कुल अलग रहता है, और बाकी वो देशों क्या प्रोडक्ट करता है। Yes, yes. So these are all examples of geographic segmentation. ये आपको समझ आ गया? Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट है? Yes, ma'am. Yes, कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, talking about the next form of segmentation, the next form of segmentation is the demographic segmentation. So demographic segmentation में हम बात करते हैं कि on the basis of age, on the basis of the family size, on the basis of the occupation, on the basis of the family life, कि family का size कितना है, ठीक है? तो ये सारी चीजों के basis पे think about products and ads on the basis of age, on the basis of family size, on the basis of occupation, on the basis of family income. Decathlon for sports for youth. Yes, what else? मूवीज जो आर रेटेड ए रेटेड अलग अलग होती है एज वाइज। Like मैम देखो शैम्पूज के सैशेज भी बनते हैं और बॉटल्स में भी आती है पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द इनकम फैक्टर. ओके, ठीक है. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स. फिर आ जाती है आपकी psychographic segmentation. So psychographic segmentation में क्या होता है? On the basis of the lifestyle, the emotional effects, the social class, ठीक है? And what is the lifestyle? बहुत fast lifestyle है. जैसे अभी हमने convenience foods की भी बात की थी कि वो geographically भी हम कर सकते हैं, और convenience foods की कौन से एरियाज में कौन सा सेट ऑफ कंज्यूमर हमारा ऐसा है जहाँ पे लाइफस्टाइल हमारी बहुत फास्ट मूविंग है और कहाँ पे नहीं है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन work on it. Okay, so examples बताओ on the basis of lifestyle, जो कि on the basis of your personality, on the basis of your values जो segmentation की जाती है. So can you think of examples pertaining to that? एस्पिरेशनल बाइक्स लाइक रॉयल एनफील्ड, फॉर्मल क्लोथ्स, Yes. इसके अलावा लग्जरी क्लोथिंग, हम्म वॉचेस, मैम मैम लग्जरी कार्स, बिकॉज yes, yes, yes. लग्जरी कार्स. Hmm. What else? Chocolates. मैम Hmm. स्टेकेशन. ठीक है. हाँ, ठीक है. सो यस, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दैट. उसके बाद लास्ट काइंड ऑफ वेरिएबल होता है हमारा सेगमेंटेशन का बिहेवियरल सेगमेंटेशन. सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे बहुत सारे सब फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, लाइक what is the occasion for which a product is being bought. Like अभी दिवाली सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, like then what are the benefits sought out. But for example if I am buying a toothpaste, तो मेरे लिए वो बेनिफिट क्या दे रहा है टूथपेस्ट? क्या वो मेरी कैविटीज को ठीक कर रहा है? क्या वो मेरी डिके को ठीक कर रहा है? क्या कोई मेरी सेंसिटिविटी को ठीक कर रहा है? सो व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम डिराइविंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. देन कम्स योर यूजर स्टेटस कि आप प्रेजेंट यूजर हो, ओल्ड यूजर हो ब्रांड के. देन द यूसेज रेट, आर यू अ फ्रीक्वेंट यूजर, आर यू अ नॉन फ्रीक्वेंट यूजर. तो जो फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं उनके लिए बिग पैक्स, बंडल पैकेज बंडलिंग एंड ऑल दिस विल कम इनटू प्ले, और जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे उनके लिए स्मॉलर पैक्स. देन लॉयल्टी स्टेटस क्या है, व्हाट इज द एटीट्यूड. सो ऑल दिस वुड कम अंडर योर behavioral segmentation. Okay, तो this was about segmentation and targeting जो कि हमने पिछली क्लास में किया था. So I have given you a brief overview of that कि segmentation क्या है, कैसे हम segments बनाते हैं. It is just a brief overview. तो that is about that. Okay,
So I am going to show you a small video which I want you to see because हमने ऑफलाइन क्लास में काफी केसेस वगैरह डिस्कस किए थे. तो just have a look. Zudio के बारे में सबने सुना है? Yes, ma'am. Are you a Yes, working ma'am. woman who's Okay, fed up ma'am. of Yes, going to the So office? I'll show you a Would you like case to work study from of anywhere Zudio. you like and do And then we'll international discuss remote it. work with Okay. high paying? Just a moment. Are you able to see this YouTube screen? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. अब दिख रही है? Still on PP. No, Do you know ma'am. No, Zillow, ma'am, which still is not. one No, of ma'am. India's most popular fashion Just a Ma'am, I moment. think आपको PPT हटानी पड़ेगी. I think it's freeze, brand? ma'am. I think Does it's not freeze. have a website where you can buy its clothes online? Just a moment. अभी दिख रहा है? Yes. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. And yet, Zudio has grown insanely as a brand in the last few years. Do you know Zudio, which is one of India's most popular fashion brands, does not have a website where you can buy its clothes online? And yet, Zudio has grown insanely as a brand in the last few years. Today, when almost all modern companies are trying to sell online in order to reach more people, Zudio is actually doing exactly the opposite. And they are still managing to defeat all of them. Take a look at the stock price of Trend, which is Zudio's parent company. It has grown 1200% in just the last 4 years. So the question is how? In a time when selling online is almost like a rule for every brand to grow today, how exactly did Zudio grow so crazily, and that too by only running physical stores? Let's decode. But before we get started, a special thanks to Zerodha 01 Network for supporting this channel. Now, to understand the success of Zudio, we will have to go back to 2016. This was the year Trend Limited, which, by the way, is part of the Tata Group, had launched Zudio. Now, the goal here was not to make it like any and every other fashion brand. Tata had a very, very clear purpose here. They wanted to cater to the aspirations and the preferences of India's youngest shoppers, which are Gen Zs. Now, you might ask me, why only Gen Zs? See, in many, many ways, Gen Z is currently the most tech-savvy generation in our time. And if you yourself are a Gen Z or you have friends and family who are Gen Z, you would probably very well understand how this particular generation has been brought up in a world that is heavily influenced by the internet and by social media. Now, Gen Zs are influenced by social media and the internet so much that more than 45% of users on Instagram are Gen Z and more than 20% of users on YouTube are also Gen Z. And the reason why I'm stressing on these social media platforms so much over here is because they are super powerful tools for people to discover new trends, especially in a place like fashion. Now, see, earlier people would have to look through newspapers and magazines in order to find out what kind of fashion is in trend. But today, almost all of that has shifted to social media. Today, when people like you and I want to know what is trending in the world, we typically look for the answer on Instagram Reels or on YouTube videos, right? And considering Gen Z was practically born and brought up in the age of social media, all of this automatically becomes a lot more applicable to them than to any other age group. So, with all of this said, I'm sure at this point you might be wondering, if Gen Z is so active and comfortable with the internet and social media, why the hell would a brand like Zudio, which almost entirely focuses on Gen Z, not even launch online? Let me tell you a very interesting fact that would answer this question for you. About 80% of India's Gen Z population lives in non-metro tier 2 and tier 3 cities. Now, while these smaller cities might not have the glamour of bigger cities like Mumbai, Delhi, Bangalore, etc., the people who live there have almost equally big aspirations. Young people in tier 2 and tier 3 towns want to dress well, they want to stand out, and they also want to express themselves almost as well as tier 1 town people do. But the biggest problem today is that they do not have enough affordable and trendy options. And that is exactly where Zudio found a massive, massive gap. They realized that while Gen Z is tech savvy for sure, e-commerce in tier 2 and tier 3 cities is simply not as effective as it is in tier 1 cities today. And also on top of that, returns in e-commerce in India can go as high as 40%. So it is super hard for a fashion brand, especially one that caters to the masses, to make money meaningfully here. So therefore, Zudio decided to stick to the old school touch and feel approach by only opening physical stores and not focusing on selling online at all.
Today, about 85% of Zudio stores are located in non-metro cities. And by the way, even in the case of metro cities, Zudio is very, very careful of where they open their stores. Look at this map of Zudio stores in Delhi. Do you notice how there is no Zudio store in the southern part of Delhi? Now take a look at this map of Zudio stores in Mumbai. Once again, there are no Zudio stores in the south part of Bombay. Now, the reason for this is very, very simple. Both South Delhi and South Bombay are perceived to be posh areas. This means the richest of the rich who live in these two cities live in these particular areas. Now, I wanted to take a moment and imagine this scenario. You own a clothing brand and you have enough money to open up a store in the best locality of two of India's richest cities, Delhi and Mumbai. The question is, would you do that? Well, if I were you, I would definitely do that. But the thing is, Zudio, which by no means is short on cash, decided to not open up stores in these very localities. And if you look just a little deeper, the reason is actually very, very smart. See, Zudio's entire mission practically is to make fashion more affordable and accessible. Even though having a store in the most prime localities of a city is a matter of pride to some extent, it simply does not help Zudio if you think about it. Because if an entire locality is rich enough to not even care about buying clothes from a budget brand like Zudio, then Zudio is obviously better off not having a store there at all. And yes, I know this sounds stupidly obvious when you think about it right now, but if you pause for just one moment and think about this deeply, it honestly is not so obvious. And I'll even tell you why. Look, the problem with a lot of brands today is that they run behind all kinds of customers at once. Most of them do not have a clear understanding of who their target audience really is. As a result of that, they end up splurging a lot of money in the wrong direction and eventually end up disappointing themselves as well as their investors. So, if you are an entrepreneur or you are someone who wants to start their own brand in the future, Zudio is a perfect example of what can happen if you find one kind of customer profile and use all your time, effort, and energy in serving them rather than focusing on everybody. But this, let me tell you, is not the end of what we can learn from Zudio. See, just having the insight that Gen Zs do not have enough shopping options definitely gave Zudio a big head start. But it obviously was not enough to keep competition away, right? And Zudio also knew this could become a problem. That is why they started focusing on their next biggest superpower, which is pricing. Now, if you have ever been to a Zudio store, you will know that their products are priced insanely low. You will find t-shirts for as low as 200 rupees, shoes for as low as 500 rupees, jeans for as low as 700 rupees, and whatnot. Now, for a country like ours in India, where an average person between the age of 18 to 24 earns less than 6,000 rupees per month, this kind of pricing is a massive blessing. Because if you think about it, for Gen Z, affordability is not really a preference. It is actually a necessity because many of them are still in college or at best in the early years of their first job. And this very affordability factor, ladies and gentlemen, has become Zudio's biggest unique selling proposition today. Also, another very, very interesting aspect of Zudio is how it focuses on building its own brand. Look, unlike other retailers like Shopper Stop or Reliance Trends, which actually focus on aggregating and selling other brands, Zudio exclusively sells its own products. Now, one obvious advantage of this is that it keeps its costs low. But more importantly, this helps Zudio build a much more stronger and more distinct brand identity in front of practically everybody. And let me tell you that that particular brand loyalty is something that Gen Z as an age group values very, very deeply. So So in a way, if you zoom out a little and think about it, Zudio's strategy is very, very simple. Control the entire value chain from design to retail and therefore deliver high quality products at insanely low prices. Now, while Zudio almost entirely focuses on Gen Z and budget conscious shoppers, there is one more brand by the same parent company which caters to a slightly more premium audience and in a very slightly different way as well. I'm talking about Westside, whose stores are spread across tier 2 cities where India's middle class and their aspirations are growing very, very rapidly. Today, while Westside has about 109 stores in metro and tier 1 cities, it has 121 stores in tier 2 cities.
Now, a very interesting thing about these tier 2 cities is that while people here have huge ambitions, competition and availability is extremely, extremely low. So, for a brand like Westside, which has great access to resources and capital thanks to the Tata Group, it is a brilliant opportunity to serve this heavily, heavily underserved market. So, now if you take all of these information pieces together and zoom out a little bit, you will probably realize how Tata Group, through its entity called Trend, is trying to capture all kinds of shoppers in India through smart business and marketing practices. They are targeting young and budget conscious shoppers through Zudio and a little more premium shoppers through their brand called Westside. Also, by the way, most of us today will not know this, but for many, many years in the past, fashion has been considered a big luxury in a country like India. It has almost always been perceived as something which only the rich and the wealthy could afford. But today, almost none of us can imagine a world like that. And a big part of credit should go to Tata's Trend. They have really managed to make high quality fashion available and accessible to everybody, no matter where you live, how old you are, or how much money you earn. Well, that's about it for this video. If you enjoyed this case study on Zudio and maybe learned something new from it, please do hit that. So I hope all of you have seen this video. Yes, ma'am. So Yes, you could ma'am, yes. understand the importance of segmentation here, that how effectively Tata they segmented the Zudio for the Gen Z population, and उसके बाद एक और segmentation का variable use किया है, इसमें क्या किया है वो? एक तो Ma'am, age के basis पे की है, डेमोग्राफिक डेमोग्राफी demographic तो age हो गई, उसके अलावा एक और किया है Ma'am, middle price, middle class, okay, price. middle class segment. वो भी तुम्हारा demography में आ गया. मैम Very good. Geographical किसने बोला? मैम सार्थक. Very good. So why do you say geographic, Sarthak? And because Not they are metro talking cities. about, yeah, ma'am, because they are talking about they are not opening their stores in south part of any specific cities, and they are also targeting, the rural part of the part instead of the metro cities and all. Yes, All very metro good. cities, I Very can say. good. Yeah. Very good. Yes. So basically, you have got an idea about segmentation with the real life case. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, चलो अब next topic पे move on करते हैं. We will be now moving. This was a basic review of the last offline class. अब हम next topic पे move करते हैं, which is positioning. तो अभी हमने क्या किया है? हमने segment किया है, target किया है. Now we are positioning and differentiating the market. Now again, how do we develop a communication and a positioning strategy? ठीक है, तो हम पहले positioning करते हैं और value positioning करते हैं. Now what is positioning per se? So I will take a brand's name and you have to think about the first thing that is coming to your mind while I speak about the brand. Maggie. Firstly, सब मैगी को सुनने के बाद सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? Instant noodles. Yeah, 2 minutes. Two minutes. affordable noodles, ma'am. Affordable, instant, 2 minutes, Indian. तो ये ब्रांड के बारे में, मैगी के बारे में ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये चीजें क्यों आई हैं? Was it Because taught of to their you in your marketing, schools, in your Ma'am, marketing strategy, what they have actually, how they actually marketize that brand. yes? So ma'am, it I is think due to बोलो. ma'am, I think due to the pricing, I thought. No, not due to the pricing, but it is due to the positioning strategy. Yeah, कि okay. आपको ब्रांड के बारे में क्या communicate किया गया है through the ads, through the information by the company. मैम मार्केटिंग के कारण इनके वो नूडल्स को आजकल कॉमनली मैगी बुलाते हैं, मतलब कोई भी चीज मैगी ज्यादातर मैगी के इस नाम से जानते हैं, नूडल्स की वजह टियर 1. हाँ जी, हाँ, तो उसको मतलब it is used as a synonym, right? तो इतना वो पॉपुलर हो गया है मैगी, ठीक है? तो वो किस लिए हुआ है? क्योंकि उस तरह से उसकी क्या बोल रहे हो? Positioning की गई. पोजीशनिंग की गई है इस तरह. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से उसकी मार्केटिंग इस तरह से की गई है, क्योंकि ये कोई हमें अपने ब्रांड्स के बारे में हम कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ी पढ़ते हैं, बट ए परसेप्शन अबाउट द ब्रांड्स कम्स थ्रू द मार्केटिंग. की जो मार्केटियर है उसने हमारे माइंड में
ब्रांड की क्या इमेज बनाई है, वो बेसिकली होती है पोजिशनिंग। अब वो इमेज हम कैसे बनाते हैं कि मैं एक ब्रांड को चूज करूंगी विज़ दैट ऑफ माय कॉम्पिटिटर। तो अगर मेरे को नूडल्स खाने हैं तो मैं मैगी के नूडल्स ही क्यों खाऊंगी एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो वो एक हमारी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो examples of value propositions, so again these are certain examples. So again this is not very readily available, Purdue chicken होता है, तो उसकी target customers क्या होते हैं, quality conscious customers of chicken, benefit क्या है, tenderness, price 10% premium. So what is the value proposition that it is offering, that it is more tender golden chicken at a moderate premium price. तो पोजिशनिंग ये चीज है कि हम ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं मेरे प्रोडक्ट, मेरी सर्विस में, मेरे ब्रांड में, जो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है, और वो चीज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने सेगमेंट को, जो कि हमने अभी तक डिफाइन किया है, ठीक है। सिमिलरली विद वॉल्वो which is a station wagon, so it is safety conscious and it is for the upscale families. इसके benefits क्या हैं, durability and safety, price is 20% premium, so it is the safest most durable wagon in which your family can ride. Then Domino's pizza, it is convenience minded and it is basically for the pizza lovers. So what are the benefits, basically delivery, good speed and quality. Again pricing क्या है इसकी, 15% premium. So again what is the value proposition, कि it is a good hot pizza, tasty pizza which is being served to your door in 30 minutes at a moderate price. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट पोजिशनिंग के बारे में? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी जैसे हमने ये एग्जांपल्स पढ़े हैं, ऐसे 2 इंडियन एग्जांपल्स आप चूज करोगे, उनके टारगेट कस्टमर सोचोगे, उसके बेनिफिट्स सोचोगे, प्राइस एंड द वैल्यू प्रोपोजिशन दैट दे आर ऑफरिंग। ओके, अंडरस्टूड क्या करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इट इज 3:49, वी विल डिस्कस दिस एट 4 बिफोर वी मूव हेड। ओके, Yes, ma'am. Hello, ma'am. मैम यस मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम मैम 2023-24 था, सिलेबस हमारा 2025-26 में भी वही रहेगा जो पहले से चलता आ रहा है? बच्चे वी आर प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट द थ्योरी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो पूछिए। ओके मैम। वेबसाइट पे आप सिलेबस देख लीजिए, जो है वही आएगा, एसएलएम्स में भी लिखा हुआ है वो सिलेबस। Ma'am, यस, what is the last step of market segmentation? I लास्ट skipped स्टेप ऑफ that मार्केट slide. सेगमेंटेशन कहाँ पे पूछ रहे हो? अभी जो आपको करना है वैल्यू प्रोपोजिशन है वो।
Okay. ठीक है, I'll share the table with you. ये रहा वो टेबल.
Yes, students. So have you thought of two Indian brands? Yes, ma'am. Yes, Yes, कौन ma'am. बताएगा सबसे Yes, पहले? One by one, please. yes, ma'am. Can I, ma'am? Yes. Ma'am, my first brand is Zoho, which is Hmm. indigenously developed by Indians only, and value proposition is that all the data are basically stored in the Indian servers. They Hmm. doesn't store Yes, the very data good. of Indian server outside the outside India, and it is almost equivalent to the Microsoft suite, Microsoft Office. You can Hmm. achieve everything in Zoho suite itself, which offers by Yes. which is offered by Microsoft. Even this Microsoft Hmm. Team alternative is there in Zoho. And Okay. ma'am, Ma'am, second is but the ma'am, and second but is it is map. not Please, one having by any one. value right now. Shh. Ma'am, नहीं in Please, it one by and one do it. ma'am, okay okay second Prince, is ma'am. please. hello, ma'am, Please. एक second. मिनट. Prince. हाँ. निर्णय आप बोलो. हाँ. One by one you can take it. This one. Ma'am, and Hmm. second is Map My India, which is a map which is Hmm. indigenously developed by India only, and it when its Yes. value proposition it is more accurate than Google Maps basically. Hmm. इसमें जो Yes. इंडिया की जो रिमोट रीजन है उसको भी प्रॉपरली मैप किया गया है एज कम्पेयर टू Hmm. गूगल मैप्स. Yes. So Yes. Good. these two Very good. these two brands. Yes. Very Yes, ma'am. good. Prince, you were saying something? मैम वो भाई ने ये कहा था ना क्या कहते हैं जो ऐप पे सारा डाटा इंडिया में रहता है पर ये तो शायद इंडियन गवर्नमेंट का वो रूल भी तो है जो भी कंपनी है सारा डाटा इंडिया में रहना चाहिए और प्रोसेस भी Hmm. इंडिया में ही होगा गूगल वगैरह जितनी Hmm. भी है सबका. Hmm. एंड मैम वो काफी न्यू ब्रांड है तो अभी वैल्यू पोजिशनिंग उसका कुछ हुआ नहीं है. वैल्यू प्रोपोजिशन तो चाहे न्यू ब्रांड हो चाहे कोई भी हो, वैल्यू प्रोपोजिशन तो ब्रांड का ऑलरेडी होता है कि किस मैम चीज पे लोगों वो का परसेप्शन डिफरेंशिएट बन कर रहा रहा है है. उसी हाँ. 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 वो तो बस ठीक है. अपनी वो एक भावना है इंडिया का इसलिए वो हो रहा है थोड़ा मैम टैरिफ वगैरह अमूल लग. हम्म. मैम अमूल अमूल. ओके. यस यस. is high मैम quality and I think affordable daily product. मैम ओला उबर. ओके. ओके. लेट मैम शिवांगी Ma'am, हिमालय स्पीक. Uber, बाजार Zomato. नैनो का कोई कंट्री प्रीमियम डिलाइट. यस. यस. मैम जैगवार L&T. ओके. व्हाट इज देयर वैल्यू प्रोपोजिशन? Ma'am, L&T is a construction company in India and he is leading India and nobody is nearby him in the construction business. Second one is LIC. So if we thought about insurance, the first thing we came in our mind is LIC. So it has an own value. Another example is Asirvad Atta. If we talk about Atta, the first thing which came in our mind is Asirvad. And another example can be the Asian Paints. If we go for paints, we first go for Asian Paints also, and it is an Indian brand. Good. Next, Shivangi was saying. Similarly, Shivangi has Tata Tea. Tata Tea can also be Yes, one ma'am. option. yes. What is their value Ma'am, proposition, bache? Fairy can Ma'am, also be an it is to deliver basically a rich and engaging tea experience to the rooted Indian heritage and societal awareness. So basically, catering to tea drinkers who connect with traditional Indian values and seek that authentic experience of tea. Yes, very good. Ma'am, Next, Fairy also. Fairy. LED bulbs. Can you Fab specify India a can company's be the name for one that? because it's ruled the entire upper class and middle urban area also. Can you repeat the company's name, Anjali? Fab India, ma'am. It's a Fab India. clothing or Okay. India. They targeting the lower class also. Sorry, upper class. Ma'am, may I speak? Okay. Yes. Ma'am, JCB Ma'am, the can be brand an is Big example. Bazaar, and the target customers are families and individuals looking to save money on daily necessities. And the price benefits are like low price and the best value and best quality of products with minimal cost. And the tagline itself defines it like इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. And the value proportion is even shop for affordable products, making good accessible to masses and providing financial benefits. And the Okay, but second one is अभी हाँ.
Big Bazaar abhi it Uh, is not anymore there in the market. You know yes, that? ma'am. Yes. Right. ठीक है, Right. ठीक. I know. हम्म. Ma'am, Bisleri can be an example. हाँ, बिस्लेरी की वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ. Ma'am, Dettol antiseptic liquid. Good. It Ma'am, provides a protection and safety for the family through its germs killing properties. Yes, yes, Dettol is an yes, Indian brand. yes. Ma'am, Ma'am, Patanjali Dettol. delivers affordable, natural, and Ayurvedic wellness products rooted in India tradition, made in India, Mm-hmm. and customer trusted for purity, health benefits, and being made in India. Again, Ma'am, when we were talking about Fab India is also not an Indian brand, although it seems, but the CEO of Fab India, he is not an Indian. Similarly with Dettol also, okay? Ma'am, it's Patanjali. हाँ, you were talking about Patanjali. मैं पहले के बता रही हूँ जो पहले discussions Okay, हुए. ma'am. Ma'am, ma'am, Lenskart is also another Ma'am, example. Lenskart value proposition. Yes. Ma'am, Vishal Mega So, ma'am, Mart. it guarantees pure and safe drinking water, I guess, which has made it accessible and convenient to the Indian. Yes. a lot of wellness Ma'am, brands Vishal are there. For example, Mamaearth, Sugar Cosmetics, Bliss Club. So these are targeting youth audience, basically demographic between 18 to 25. So Yes. these are there in wellness. Also, Bella Vita is also there in wellness. Ma'am, in medical Yeah, so sector, the basically, Wellness Forever is one of the biggest brand. right. So basically, these you have gotten now an idea of so how what is positioning and what is value proposition. I hope this is clear to Yes. everyone, and you have discussed Yes, very ma'am. good examples of Yes, ma'am. Indian Yes, brands. Yes, Keep it ma'am. up. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब बात आती है कि हाउ डू वी डेवलप एंड कम्युनिकेट अ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी. अभी तो हमने ये तो पढ़ लिया कि पोजिशनिंग है क्या, बट हाउ डू वी डेवलप एंड कम्युनिकेट अ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी. So one of the strategists and a marketing strategist, Mr. Rees and Trout, he suggested some ways to strengthen your brand position, develop your brand position, and at the same time communicate that brand position to the audience. So सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो हमारी करंट पोजीशन है, जहां पे कंपनी की करंट पोजीशन है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो. सो फॉर एग्जांपल द करंट पोजीशन ऑफ Domino's is a good hot pizza, 30 minutes of delivery, moderate price. तो इसी पोजीशन जो ये मेरी ब्रांड पोजीशनिंग है, मैं इसी को स्ट्रॉन्ग करती रहूं, इसी पे और वर्क करती रहूं. एक तरीका तो ये होता है. नेक्स्ट मेथड इज grab an unoccupied position. So what is grabbing an unoccupied position means? Can anyone tell? Grab an unoccupied position. Ma'am, some Ma'am, basically vacant space in that the market. ma'am, the sector which is basically is untouched. Untouched. So Untouched, yeah. untouched. That's that where to launch the product. Yes. Unique. Unique. For example, ma'am. For example, अभी जो डोमिनोज की पोजिशनिंग है वो है कि वो 30 मिनट्स में आपको दे रहा है मॉडरेटली प्राइस्ड वुड पिज्जा. बट एक अनऑक्यूपाइड पोजिशन डोमिनोज के पास क्या हो सकती है कि वो बहुत ही कोई एग्जॉटिक पिज्जा में आ जाए कि स्पेशली वुड फ्राइड पिज्जा विथ प्रीमियम वेजिटेबल्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दैट इज ऑक्यूपाइंग एन unoccupied position. It is delivering on train. तो वो भी एक अनऑक्यूपाइड पोजीशन थी जिस पे उसने काम किया. Ma'am, in position, when we are talking about, ma'am, when we are talking about unoccupied position, are we talking about the services or are we talking about positioning a product in that way? Positioning a product. Right now we are talking about positioning a product, but definitely could be about services also. तो जो ब्रांड की करंट पोजीशनिंग है उससे हटके हम किसी और सेगमेंट पे या किसी और पोजीशनिंग पे मूव कर सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. Any other doubt till now? Okay.
नाउ द नेक्स्ट इज डिपोजिशन. डिपोजिशन इज कि जो मेरी पोजिशनिंग है उसको मैं हटा ही दूं. अगर डोमिनोज बोल रहा है कि वी आर डिलीवरिंग द पिज्जा इन 30 मिनट्स एंड देयर वर अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ड्राइवर्स कि वो 30 मिनट्स में बहुत उनको रैश ड्राइविंग करनी होती है, ये करनी होती है, तो डोमिनोज ने अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी से ये हटा दिया कि हमें 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर करते हैं, वो हटा ही दिया. दैट इज डिपोजिशनिंग, राइट. देन रिपोजिशनिंग इज आफ्टर यू डिपोजिशन दोबारा से एक दूसरे पैरामीटर पे रिपोजिशन करो. So can you think of any company which has gone for repositioning? Can you think of any company जिसने repositioning की है? Ma'am, Tata. कैसे? Their nano, they actually obsolete that a specific brand of a specific car, I can say, and they repositioned within different, product line in that sense. Okay, yes. Again, Maggie is a very classical example of repositioning. मैम मैगी ने जैसे स्पेशल मसाला अलग से एक फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया, और मैम जैसे पार्ले जी बिस्किट है उसने भी एक अलग फ्लेवर, एक पार्ले जी गोल्ड और एक चॉकलेट फ्लेवर पार्ले जी में इंट्रोड्यूस किया. नहीं, that is not repositioning. That is moving into an unoccupied position. Repositioning is in the case कि हाँ बोलिए. जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैम महिंद्रा ने अभी मैम दे रिपोजिशन themselves to EV segment, electric vehicle segment, just to go green. मतलब दे आर सेलिंग बट दे आर मतलब उन्होंने अपना स्ट्रेटजी ईवी की तरफ ज्यादा फोकस किया क्योंकि गवर्नमेंट उसकी तरफ रिपोजिशनिंग होगी. हाँ, अगर हम बिल्कुल ही किसी नए सेगमेंट में मूव करते हैं वो है अनऑक्यूपाइड पोजीशन. बट मैगी के केस में क्या हुआ था, मैगी का बहुत ज्यादा वो आया था कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेड है, ये है, वो है, उसके मसाला प्रॉपर नहीं है. सो हाउ डिड दे रिपोजिशन? उस पहले कन्वीनियंस और फन टाइम को छोड़ के दे रिपोजिशनड इट एज समथिंग व्हिच इज हेल्थियर ऑप्शन विद एनरिच्ड विद विटामिन्स, ये सब. दैट इज रिपोजिशनिंग. डिफरेंस समझ आ गया? हम लाइक आटा नूडल्स मैगी ना. Yes, ma'am. हाँ, they came up with this kind of a product. क्या कह रहे हो? टाइटन वॉचेस उन्होंने अपना एक अलग सेगमेंट ओपन किया इन रागा फॉर फीमेल वॉचेस. दैट इज अनऑक्यूपाइड. अगर आप अलग सेगमेंट ओपन करो जिसमें टारगेट ऑडियंस ही अलग है, पोजीशनिंग ही अलग है, दैट इज उनके पास विमेन वॉचेस थे, लाइक उन्होंने डेडिकेटेडली ऑन अ लग्जूरियस बेसिस पे अलग रागा के लिए ओपन किया है, तो वो किस में काउंट होगा? वो अनऑक्यूपाइड होगा. एक नया सेगमेंट ही उन्होंने क्रिएट किया है. ओके ओके, ठीक है. Yes, got it. Yes, ma'am. So McDonald's can also be another example, ma'am, because they started off with just burger and fries, and when later on the concerns raised for nutrition, so they opened up for more salads and stuff like that. Yes, salads and vegetarian options. Yes. So that they have also introduced a vegan meals. Yes. So very good example. Very nice. Very vegan meals they have Ma'am, introduced. can I give one example? Yes. Ma'am, I would like to give an example of our own country, India. Like as PM Modi, first we were doing Made in India, and then we did Make in India. So this can be as an example of our country, how we reposition ourselves as a country from Make in India to Made in India. Yes. समझ आ गया रिपोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट सबको? एक सेकंड. यस मैम. किसी और को कोई एग्जांपल देना है या कुछ समझना है? मैम एक सेकंड, मेरे को ये पूछना है, अगर एक कंपनी ने मतलब वो डिपोजिशन किया और दूसरे मार्केट में मतलब दूसरे तरह के बिजनेस में आ गया, तो वो आएगी रिपोजिशनिंग में? वो बच्चे रिपोजिशनिंग नहीं आएगी. वो होती है कि हम एक अनऑक्यूपाइड पोजीशन में जा रहे हैं अगर हम कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है. बट एक चीज पे जैसे यूट्यूब पहले डेटिंग साइट थी, मतलब डेटिंग के लिए था वो. अब उन्होंने वो बंद करके फिर वीडियो शेयरिंग, सोशल मीडिया. यूट्यूब सबसे पहले उनका फर्स्ट बिजनेस डेटिंग का ही था मैम. फिर इन्होंने वीडियो शेयरिंग में किया था. हाँ, तो दैट इज रिपोजिशनिंग. अगर आप एक ब्रांडिंग को कंप्लीटली चेंज करके उसको खत्म करके एक नए तरह से बोल रहे हो तो दैट इज रिपोजिशनिंग. बट एग्जिस्टिंग अगर है और फिर नए में मूव कर रहे हो तो वो अनऑक्यूपाइड पोजीशन है. Can I give example? Yes. बोलो. मैम जैगुआर कार्स.
अच्छा, किस Before repositioning का एग्जांपल दे रहे हो? they were facing too much of technical problems, so they pull back their products, and again they have relaunched their product. Yes, okay, good. ठीक है, तो बेसिकली आइडिया हो गया सबको व्हाट इज रिपोजिशनिंग? Yes, ma'am. Yes, ठीक Yes, है, ma'am. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now again, what are the rules for success? Become the best, achieve a adequate performance level, keep improving, becoming more adequate. So this is how we have to have a good proposition strategy. Now जब हम बात कर रहे हैं पोजिशनिंग की, तो हमें बताना है एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. हमने वैल्यू प्रोपोजिशन बताई, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ब्रांड व्हाई इट इज बेटर देन द अदर ब्रांड्स. Because Domino's says कि my brand is better because I am giving a value for money pizza in just 30 minutes. So that is the unique selling proposition of Domino's. ठीक है, that is the value proposition. ठीक है, तो first we have to decide that how many ideas, how many value propositions we have to give. ठीक है, एक बतानी है, दो बतानी है या तीन बतानी है. तो this is one of the most critical areas and one of the most important areas, क्योंकि इसमें क्या होता है, there are 4 positioning errors that can happen. Now what are those errors? First is under positioning. आपने अपनी value proposition create करते करते आप बता ही नहीं पाए कि आप क्या करना चाह रहे हो. What is the differentiating factor? That is under positioning. ओवर पोजिशनिंग इज आपने बहुत सारी चीजें बता दी, मेरे ब्रांड के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. सो दैट इज यू आर पोजिशनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर value proposition or a brand proposition. Third category is confused positioning. What is confused positioning? That brand itself is not able to communicate directly to the customers कि वो चाह क्या रहे हैं. ठीक है, वो खुद ही कंफ्यूज हैं. क्या हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं? आर वी गिविंग अ गुड प्रोडक्ट? आर वी गिविंग द डिलीवरीज in 30 minutes? So what is that? And sometimes the positioning is done such that it seems very doubtful. ठीक है, confused है, doubtful है कि ये जो चीज है भी, ये जो positioning कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं है. So these are the errors that can happen while we are positioning any product or service. And so we have to be very careful while we are developing our unique selling proposition. Otherwise we are liable to what do I say? We are liable to commit these positioning mistakes or these positioning errors. Okay. Now, can you think of brands जिनके साथ ये errors हो गए हैं या वो कर Yes. चुके हैं? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Nokia, ma'am, is a very good example. मैम जब एंड्रॉइड जब मार्केट में आया, मैम जब एंड्रॉइड मार्केट में आया था तो नोकिया प्रॉपरली अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाया था कि हम लोग एंड्रॉइड सेगमेंट में जाएंगे कि वापस से कीपैड वाले में रहेंगे. तो दैट्स व्हाट दे, उन्होंने ऐसा फीचर निकाला जो बहुत ही मतलब टारगेट ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई. तो उसमें पोजीशनिंग की किसमें आएगा ये? मैम आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड एंड डाउटफुल पोजीशनिंग पे दोनों के बीच में. मैम ओके, वेरी गुड. एनी अदर एग्जांपल? पेटीएम कैसे? मैम they were giving cashbacks and they were focusing on their app also, and in this case the phone pay came and the Google Pay, and they were just giving services only, no cashback and all, and they have gained their market by simplifying Very their good. app. Okay, can you give me some more examples? In last में थे सारे. बायजूस. ओके, कौन सी कैटेगरी में? ओवर पोजिशनिंग मैम. ओवर पोजिशनिंग. ठीक है. ओके ओके, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज जो हम एकदम से बोलते हैं. सो अंडर पोजिशनिंग हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कस्टमर्स दे हैव वेरी वीक और अनक्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर. ठीक है, तो टाटा नैनो जब इंडिया में आई थी, so it was marketed as what? It was marketed as the world's cheapest car. But but उन्होंने ये highlight नहीं किया उसके benefit, safety, designs. So consumers, they were very unsure. It was slightly under positioned कि ये reliable है, stylish है, aspirational है.
सो इट वॉज वेग पोजिशनिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओवर पोजिशनिंग, इट इज टू नैरो इमेज। सो कस्टमर्स इस केस में क्या सोचते हैं, दैट इट इज ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल Lamborghini is seen as a very super luxury car. So a middle class, he doesn't even consider it for buying it, अगर वो एक थोड़ा स्लाइटर चीपर वर्जन भी उसको लॉन्च कर दे। सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर पोजिशनिंग, कुछ ज्यादा ही उसे प्रीमियम बना देना या कुछ ऐसा दिखाना कि जो थोड़े लोअर सेगमेंट्स होते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग, सो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजिंग अबाउट द ब्रांड आइडेंटिटी। सो एक टाइम पे कॉलगेट, इट लॉन्च्ड कॉलगेट किचन ऑन ट्रीज विच इज द फ्रोजन फूड। सो इट वॉज टोटली इनकंसिस्टेंट विद द टूथपेस्ट ब्रांडिंग कि भैया टूथपेस्ट कैसे फ्रोजन फूड में जा रहा है। सो दैट वॉज कंफ्यूज पोजिशनिंग एंड द कंज्यूमर्स वर टोटली confused. Again LG ने एक पॉइंट पे कहा पोजिशनिंग की अफोर्डेबल एंड प्रीमियम इनोवेशन ब्रांड। सो अगेन प्रीमियम भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड कंज्यूमर परसेप्शंस आए एंड इट वाज अगेन अ कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग। देन डाउटफुल पोजिशनिंग, पेप्सी का क्लेम कि इट इज वन ऑफ द हेल्दियर कोलास। सो पीपल वर कंफ्यूज्ड कि भाई इतनी ज्यादा शुगर और इतने सारे हेल्थ रिस्क वाली ड्रिंक, हाउ कैन इट बी हेल्दियर। एंड अगेन सम बजट स्मार्टफोन ब्रांड्स से कि दे हैव द सेम परफॉर्मेंस ऑफ आईफोन। अगेन क्रेडिबिलिटी डाउट हो जाती है इन सब चीजों से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कंफ्यूज Fair and Lovely, which is now Glow and Lovely, can be the Yes, doubtful ma'am. positioning example. Why? See, because they first claim ki it's a skin glowing cream, right? As a name, Fair and Lovely, but after some claim, कुछ उनके ऊपर केस वगैरह कुछ फाइलें हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी नेम Yes, चेंज ma'am. कर दिया। तो ये आप बोलो कंफ्यूज पोजिशनिंग, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कंफ्यूज पोजिशनिंग क्यों है ये? बिकॉज उन्होंने गलत क्लेम किया था, तो बाद में कंज्यूमर्स उन पे ऊपर डाउट, आई थिंक कंज्यूमर्स का डाउट रहा इस वजह से। ये तो फॉल्स मार्केटिंग में आएगा ना शायद। हाँ, ये दिस इज अनदर कंसर्न ऑल टुगेदर, इट इज मोर ऑफ एथिकल मार्केटिंग एंड एथिकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ओके मैम, चलो आगे चलते हैं। हम रेड बुल, यस मैम, रेड बुल का भी सेम वो केस भी था। फॉल्स मार्केटिंग का है भाई, फॉल्स फॉल्स मार्केटिंग ही मार्केटिंग है का है वो। फॉल्स मार्केटिंग, हाँ वो अलग उस पे कंसर्न भी था केस वैसे। हुआ था। फॉल्स मार्केटिंग नहीं थी यार, उसके अंदर डबल आई था। अरे वो बाद में किया है, इट गिव्स यू विंग्स करके थी टैगलाइन उनकी, तो वो मार्केटिंग ही थी ना उनकी। तो अभी भी तो पोजीशनिंग का एक एग्जांपल तो बन सकता है ना कि भाई कई लोग तो अभी भी ये सोचते हैं कि विंग्स देते हैं वो सच में। नहीं, अब उनकी स्पेलिंग देखना भाई, 3-4 आई लगा दी। स्पेलिंग से नहीं यार, प्रोनाउंसिएशन डाउटफुल तो अभी भी है ना। स्पेलिंग तो कई लोग ऐसे हैं जो स्पेलिंग पढ़ भी नहीं पाते उसकी। भाई वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे पोजीशनिंग पढ़ रहे हैं हम। चलो इसको थोड़ा सा रीड करके आके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन कौन से फीचर्स पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट, फीचर कोई बहुत अच्छा है जैसे एप्पल करता है, या बेनिफिट जो प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम कर सकते हैं पोजीशनिंग, या यूज और एप्लीकेशन पोजीशनिंग, इसका यूज क्या है, क्या हमारा यूजर बेस है। कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग कर सकते हैं, जैसे कई बार पेप्सी और कोका कोला करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी पोजीशनिंग की, एक पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी में इसको पोजीशन किया है, या हम प्राइसेस के बेसिस पे कि क्या कहते हैं इसको, मीडियम प्राइस है, हाईली प्राइस है, इन सब चीजों के बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके मैम, यस ठीक है। मैम। सो दिस वाज अबाउट पोजीशनिंग। एक छोटा सा वीडियो, स्टारबक्स सबको पता है क्या है? यस मैम। स्टारबक्स की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है?
मैम चलो उस प्रीमियम वीडियो को देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे चलो Renowned for ओके their distinctive brand, unique coffee blends, and iconic shops. But have you ever questioned how Starbucks developed into such a popular brand? It all began in 1971 when Jerry Baldwin, Zed Cigi, and Gordon Boker, three coffee lovers, launched the first Starbucks store in Seattle's Pike Place Market. At the time, Starbucks was a tiny coffee bean roasting business that solely offered coffee beans and coffee brewing supplies. However, Starbucks underwent a change in the 1980s under the direction of Howard Schultz, who joined the firm as CEO in 1982. Having been inspired by the coffee houses he had visited while traveling in Italy, Schultz had a dream to establish a coffee culture in the country. As he said in an interview, we wanted to create a place where people could come together, enjoy high-quality coffee, and connect with one another. Schultz introduced a new concept of selling freshly brewed coffee, along with the beans and coffee making equipment. Starbucks was able to stand out in the competitive coffee industry thanks to its emphasis on quality, experience, and sustainability. They also focused on creating a differentiated brand positioning by sourcing ethically and sustainably grown coffee beans, which resonated with socially conscious consumers. Starbucks followed an aggressive retail growth plan, opening outlets in high traffic areas and growing overseas. They became a global brand with a significant presence in more than 80 countries as a result of their customization of their services to local taste and cultural quirks. Another important component of Starbucks' success has been innovation. To adapt to shifting consumer preferences and trends, they consistently improve their product offerings by introducing seasonal specials, tailored options, and increasing their culinary menu. Starbucks has been a leader in utilizing technology to improve consumer experiences and optimize business processes. They developed a loyalty program app, offered mobile ordering and payment options, and made investments in digital efforts to improve operational efficiency. Sustainability and corporate social responsibility are also important topics at Starbucks. They have launched initiatives to lessen their environmental impact as well as programs like the CIF.E that practice to ensure the ethical procurement of coffee beans. But perhaps the key to their success is the company's emphasis on fostering client loyalty. Starbucks promotes long-term relationships with its consumers and builds a devoted and loyal client base through its Starbucks Rewards loyalty program and personalized customer involvement. In conclusion, a combination of factors such as their exceptional brand positioning, aggressively expanding stores and location strategy, product innovation, technology progress, and strong customer relationship management can contribute to Starbucks' success. Thank you for watching this video. So Indriyo, Yes, ma'am. यस मैम इसमें क्या पोजीशनिंग है स्टारबक्स की? मैम पहला तो मैम हाई क्वालिटी कॉफी एंड दूसरा मैम कि दे प्रोवाइडेड अ कॉफी कल्चर वेयर पीपल कैन सिट टुगेदर एंड एंजॉय द कॉफी together. So that's what the culture and the coffee are two brand positioning of the Starbucks. The cafe, मैम कैफे कल्चर बेसिकली स्टारबक्स ने ही स्टार्ट किया था, मुझे इतना आइडिया है. यस मैम. मैम इन्होंने मैम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी 1971 में. इनके 3 कॉफी लवर्स थे और 1980s में इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी. पोजीशन चेंज करी थी हनी. Ma'am, it's a third home between home and office. Like they provide space more than coffee for sitting. Yes, yes. Yeah, they had established themselves as the third place, basically. Okay. So yeah. So that was about it. So just a brief review of what we did in the today's class. We talked about recap. We had a recap about the segmentation. What is segmentation? What are the levels of market? How do we go about doing the segmentation? What are the processes? And we saw some videos and we talked about what is positioning, value proposition. How do we go about doing positioning? What are the errors in positioning? And what are the ways through which positioning can be done? Any doubt anyone has till now? Ma'am, I have a small doubt. You gave an example of Lamborghini for over positioning, right?
So the target audience is the people who are into the richer section, I Yes, suppose. their target audience are definitely the upper segment people, but Yes. उन्होंने इतना ज्यादा इसको ऐसा शो कर दिया कि ये it is only for the rich people or it is only for the people with higher income, कि if they move into a segment with a slightly lower version of Lamborghini, तो जो middle income segment है वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम इसको खरीद सकते हैं. Are you getting the point? Yes, but again, टाटा ने खुद को ऐसा पोजीशन किया हुआ है in few of the markets, in few of the products जहाँ पर वो affordable branding या फिर clothing या फिर whatever the products they are offering, वो cheaper section में देते हैं. And Lamborghini already have targeted their audience as like upper class. So वो already वो position कर चुके हैं, वो over position नहीं कर रहे हैं, I suppose. नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे कि वो ओवर पोजीशन अब कर रहे हैं. पोजीशनिंग उन्होंने इनिशियल की, बट जब वो पोजीशनिंग कर रहे थे, चाहे टाटा भी है, टाटा अगर बारी बारी यही करता रहेगा कि वी आर फॉर द मिडिल सेगमेंट, ए सेगमेंट, ए सेगमेंट, तो अगर वो किसी हायर सेगमेंट के लिए करेगा तो प्रोबेबली पीपल वुड नॉट थिंक कि क्या वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं. Okay, ठीक है, got your point. Yeah, thank you. Got it? Okay. मैम, Yes. मैम अभी थोड़ी देर पहले रेड बुल के बारे में बात हुई थी, तो उसके अंदर जो वर्ड है विंग्स, पहले तो उसमें सिंगल आया था तो सभी लोगों को लगता था कि ये सच में विंग्स देते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर केस हुआ उसके बाद उन्होंने ट्रिपल आई कर दिया उसमें कि उसका मतलब पंख ना रहे लेकिन वो उसका वर्ड वही रहे. लेकिन अब अभी भी उनकी एड्स में विंग्स दिखाते हैं कि वो सच में विंग्स दे रहा है. और अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को ये बोलें कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो वो भी यही सोचेगा कि भाई उससे पीने से पंख ही मिलेंगे. तो उस मार्केट में पोजीशनिंग ही ये बना ली है उसने कि भाई रेड बुल गिव्स यू लिटरली विंग्स, लेकिन उसका मतलब टेक्निकल मीनिंग कुछ और निकलता है. तो उसमें आप व्हाट इज योर क्वेश्चन बच्चे? अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला था कि वो फॉल्स मार्केटिंग था. वो बेसिकली वो कौन सी मार्केटिंग था? तो बेसिकली इट इज क्योंकि सिंस इट a case happened similarly with मैगी, तो क्या होता है कई बार ये कंसर्न्स हमारे कुछ एथिकल, कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स कर देते, तो एथिकल मार्केटिंग में ये चले जाते हैं, राइट? बट उसके बाद कंपनीज यूजुअली हैव टू गो इन फॉर रीपोजिशनिंग. व्हेन द कंपनी कम्स बैक दे हैव टू डू इट, क्योंकि उनको तभी भी सर्वाइव तो करना है ना. So they come with either a change brand name, change product or something, जैसे मैगी ने किया. बट फिर आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिपोजिशन करना पड़ेगा. बट दैट इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द मार्केटर ऑल्सो, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी एक परसेप्शन वैसा बना हुआ है. ठीक है, परपेचुएशन उसका बना हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ अपनी टैगलाइन में ट्रिपल आई किया था. उसने बाकी प्रोडक्ट वही रखा, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स भी वही रखी. एडवर्टाइजमेंट्स में अभी भी मतलब जब वो नाम लेते, जो इशू था दैट वाज मोर ऑन देयर ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, ब्रांड जो उनका लोगो था. ठीक है, अभी भी अगर कोई उनके ऊपर केस करना चाहे तो कर सकता है कि भाई उसमें एडवर्टाइजमेंट में तो तुम विंग्स दिखा रहे हो. नहीं, डायरेक्टली आई डोंट थिंक कि कौन सी कैटेगरी में आएगा. इट इज मोर ठीक है, तो ये इट इज मोर ऑफ अगर केस करना है नहीं करना है, दिस कंसर्न्स. अब वो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, क्या वो पॉइंटर्स ढूंढते हैं, कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर देते हैं. समटाइम्स इट इज नॉट रियलिटी ऑफ ऑल, तो वो दैट इज अनदर डोमेन ऑफ स्टडी. बट इसमें दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स. ठीक है, okay, anything else apart from this? No, ma'am. So I think we are good enough. In the next class we'll start with differentiation, and I think whatever chat it is there in these classes, these are not for your personal chit chats. Okay, these are just for the official information or sometimes the questions that are being asked. So we request you to refrain from doing any informal chit chats in these groups. Okay, ma'am. So thank you everyone, thank you for joining in. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Excuse me, ma'am.
Yes. Ma'am, as per our SOL material, till what chapter we have covered? Till third. We are on the third chapter. Yeah. Okay. मैम एक क्वेश्चन था स्टडी मटेरियल के हाँ रिगार्डिंग। जी। स्टडी मटेरियल एसओएल की तरफ से डिलीवरी होगा क्या मैम? आई थिंक बच्चे डिलीवर होता है, आपने जो ऑप्शन किया होगा वो आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। ओके, उसका रिगार्डिंग डिटेल्स नोटिफिकेशन कैसे मिल सकता है मैम? वेबसाइट पे आता है बच्चे, आपको वेबसाइट आप रेगुलरली चेक कीजिए। ओके मैम, मेरा एक क्वेरी था, जैसे आपने अभी बोला कि एक ग्रुप बना है, तो अगर उसमें मतलब एक्सेस कैसे मिलेगा उस ग्रुप का? कौन सा ग्रुप मिला है मेरे को? आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चैट्स व्हिच आर कमिंग ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। देयर आर नो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके ओके ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.